तो प्रोटॉन बीम थेरेपी। तो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के अंदर ना ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स में ज्ञान तो बहुत ज्यादा होगा। जैसे अभी ये सिर्फ क्वार्टरली है करंट अफेयर्स देखा जाए तो देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट वी ओनली नीड अ फोकस्ड इंफॉर्मेशन जो प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी। तो जितना जितना मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया बस उतना ही करके जाना है। पूरे डॉक्यूमेंट को रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है। अब एसेंशियली प्रोटॉन बीम थेरेपी है किसके लिए? सो इंडिया में नहीं है ये। कैंसरस ट्यूमर्स को सेट करने के लिए होता है एसेंशियली। हम कोई भी और अगर रेडियोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, तो कैंसर की रेडिएशन थेरेपी के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी टारगेट हो जाते हैं साथ साथ में। यहाँ पे प्रोटॉन बीम थेरेपी में दैट इज समथिंग दैट वी कैन अवॉइड बिकॉज इट कैन प्रिसाइसली टारगेट द ट्यूमर। बस बात इतनी सी है। ठीक है। और है क्या इसमें? बेसिकली इट्स अ हाई एनर्जी प्रोटॉन व्हिच इज नथिंग बट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। दैट्स इट। H प्लस आयन को प्रोटॉन बोल देते हैं। ओके। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट? ये कॉस्टली है ऑफ कोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं। इंडिया में इसको रेगुलेट कैसे करेंगे? फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल है एक चेन्नई के अंदर जिसमें प्रोटॉन बीम थेरेपी एक अलाउड है। एक दिस द ओनली वन व्हिच हैज इट and 47% of cases were of brain tumors where 900 patients were treated. Prostate, ovary, breast, lungs, bones, soft tissue, cancer patients, all kind of people go through this PBT, proton beam therapy. So that's that. So X-ray versus proton beam, this is the difference. X-ray passes entirely through the cell. This will work only upon the cancerous cell and then just move out. In the brain, there are so many neurons, the attachments are there. In case you are working on a wrong attachment, you may as well get paralytic. So that's what we want to avoid. So this is PBT and the prospects theory. Only thing you have to remember for prelims in this regard is it precisely targets the tumor, avoiding the healthy tissue. बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। और क्या आगे? ये इंडियाज फर्स्ट DNA वैक्सीन फॉर डेंगू। अब बड़ी तरह की वैक्सीन है, DNA RNA हमने पढ़ ली कोविड-19 के चलते चलते। तो किसने बनाई पहले तो ये देखिए। सो इंडियाज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस इन कोलैबोरेशन विद 9 अदर इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली DNA वैक्सीन कैंडिडेट फॉर डेंगू फीवर। तो अब जैसा ऐसा कुछ होता है ना तो किसने बनाया वो बहुत जरूरी है। ठीक है। पहले इसमें पूछ सकते हैं। अब DNA वैक्सीन होता क्या है? So it uses a small piece of DNA that codes for a scientific specific antigen, that is a molecule that triggers immune response from a pathogen such as a virus or a bacterium to stimulate an immune response. So DNA is injected directly into the body cells where it instructs the cells to produce the antigen. So basically immune response को trigger करने के लिए एक direct mechanism है. Okay. The immune system recognizes the antigen as foreign and mounts an immune response against it, which helps to develop immunity to the pathogen. So these are third generation vaccines. The ZyCoV-D is the world's first and India's indigenously developed DNA-based vaccine for COVID-19. So prelims में ये इसका नाम ZyCoV-D, ठीक है, ये COVID-19 के लिए थी, ये डेंगू के लिए है जो अब बनी। ओके। डेंगू बेसिक्स यहाँ पे दिए हैं। किस तरह के सीरोटाइप्स होते हैं? सो दे आर डेन 1 से लेके डेन 4 तक 4 तरह के डेंगू आते हैं हमारे पास। ओके। नाउ द डेंगू वैक्सीन इज CYD-TDV और डेंगवैक्सिया, approved by US FDA in 2019, is the first dengue vaccine to get regulatory nod in USA. ये इसके ऊपर डेंगवैक्सिया करके क्वेश्चन आने का तो कोई चांस नहीं। देखो बड़ा सीधा साधा सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आने का चांस यही है कि एक तो DNA वैक्सीन क्या होती हैं, इंडिया में फर्स्ट डेंगू वैक्सीन किसने प्रोड्यूस किया, एक ये क्वेश्चन आने का चांस है। बस ये दो ही चीजें। नासा's imaging X-ray polarimetry explorer, let's see.
So researchers studied the supernova explosion that occurred 450 years ago using NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer. See, there is one particular fact that you should understand. Waves don't die out. Any kind of electromagnetic waves that are once emitted are emitted forever. Why? We know that energy is always conserved. Law of conservation of energy. It can neither be created and nor be destroyed. It can only be converted from one form to the another. So here also, if a supernova explodes, new energy is released into the atmosphere. How that is released? E is equal to mc square. The mass of that supernova will convert now into the energy. Once that energy has been converted, maybe it can then again convert into mass. But as long as it is there, this will remain, this relationship is there. Okay? तो इसलिए 450 साल पुराना भी अगर कोई EM waves emit हुए हैं, वो हम आज study कर सकते हैं. That's the situation. The explosion called Tycho was visible to the people on the Earth in 1572, and the shock waves from the blast still propagating through the cosmos. So, अब ये prelims में ना ऐसे पूछ सकते हैं. Recently, Tycho has been seen in news. ये है क्या? So it is a supernova explosion back from 1572. Okay. अब इसमें जो IXPE है क्या? So IXPE Space Observatory is a joint effort of NASA and Italian Space Agency. कई बार प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का तो नहीं है. ओके क्योंकि ऐसा आई से बंदा वहां पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है. फाइन. देन it will help observe polarized X-rays from neutron stars and supermassive black holes. Measuring the polarization of X-rays traces the story of where the light came from, including the geometry and inner working of its source. It will help the scientists understand how black holes spin and their location in the past, and also unravel how pulsars shine so brightly in X-rays. See, X-ray polarization is essentially any electromagnetic wave. If it gets more polarized as it is going along, as it is passing through a certain, let's say, conjuncture or small hole, or maybe a particular space. So the way it is getting polarized more and more, if you trace it back, you will be knowing about where it came from, how was the structure which radiated this kind of an X-ray. So you will come to know about that. जैसे हम लाइट, कोई भी एक लाइट आ रही है टॉर्च से, तो वो उसको देखते हुए हम ये जज तो कर सकते हैं ना कि ये कन्वेक्स लेंस से आ रही है कि कनकेव लेंस से आ रही है. कन्वेक्स से आ रही होगी तो वो थोड़ी सी फैलेगी, कनकेव से आएगी तो ऐसे पॉइंटेड होगी. इसी तरह से है कुछ. तो एक्सरे में भी जो पोलराइजेशन है तुम वो स्टडी कर सकते हो, तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आ रही है, वो सोर्स कैसा है. तो इट इज फॉर दैट पर्पस. तो क्वेश्चन आने का चांस ज्यादातर ये वाला है. ठीक है. India's third moon mission. So ISRO has successfully conducted the flight acceptance hot test of CE-20 cryogenic engine. CE stands for cryogenic engine only. That will power the cryogenic upper stage of the launch of the Chandrayaan-3 mission. अभी इसको जब हो जाएगा ना, उसके बाद इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. अभी इसकी ना रिसर्च स्टेज ज्यादा चल रही है. ठीक है. Chandrayaan-3 के बारे में थोड़ा सा देखिए. Chandrayaan-2 happened in July 2019, and which aimed to land a rover on the lunar south pole. The mission is scheduled now, Chandrayaan-3, in later half of 2023 by launch vehicle Mark 3, श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे. Subsequent failure of the Vikram lander, जो Chandrayaan-2 में अटेम्प्ट किया गया था, लैंड कर गया था लेकिन उसके बाद में it lost communication and control. Okay. To the pursuit of another mission to demonstrate the landing capabilities needed for lunar polar exploration mission proposed in partnership with Japan in 2024. Now the mission will have 3 major modules: propulsion, lander and rover. So अब 3 चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं.
प्रोपल्शन मॉड्यूल तो बेसिकली यही होता है कि यहाँ से लेके आपने मून तक लैंड करना है, ठीक है। फिर लैंडर मॉड्यूल जो वहां पे लैंडिंग वाला काम करेगा, फिर रोवर जो वहां पे रिसर्च करेगा। The propulsion module will carry the lander and rover till 100 किलोमीटर lunar orbit. So मून के 100 किलोमीटर तक लेके जाएगा। लैंडर will have the capability of soft landing at a specified site and deploy the rover. अभी हम ये क्यों कर रहे हैं ये ज्यादा कारण है, लेकिन वो मीन्स के साथ रिलेटेड है। Essentially, any kind of space capabilities that we are developing today, we can serve as a major partner not only in research but also this is a commercial arm for us. For example, there is ISRO, which is sending a lot of satellites for a lot of countries from time to time, and India has the cheapest module to do that, and that way it is earning for India also. अब इसमें क्वेश्चन आने के चांस क्या है? ये विक्रम लैंडर बस एक। दूसरा, कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके हम लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चला रहे हैं 2024 के लिए? जापान, ठीक है। बस ये दो है। देन ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर। सो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट to provide intensive training to islanders of Lakshadweep for ornamental fish aquaculture. Essentially, Lakshadweep, as we know, is a coral island, and nearby that, to give a propulsion to the blue economy, they are helping these people to build some kind of ornamental fish aquaculture. Let's see what is this. A prelims में question इस तरह का आता है. It's a culture of attractive, colorful fishes of various characteristics, which are reared in confined aquatic systems, and they are like living jewels. तो जो सुंदर सुंदर फिश आप घर में एक्वेरियम में रखते हो, तो उसके लिए, ठीक है। अब इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में पढ़ना है। व्हाट इज दिस ICAR-NBFGR? This was established in 1983 at Allahabad, comes under the aegis of ICAR only, and undertakes research related to conservation of fish germplasm resources of the country. Next, Momo pregnancy. So this was another one. What it is basically, that is what you have to know. So a US woman gave birth to two pair of identical twins within 6 months of each other. आमतौर पे तो इकट्ठे ही होने चाहिए. Such twins are known as Momo, an abbreviation for the monoamniotic chorionic, and they are some of the rarest types of twins, making up less than 1% of all the births in USA. Okay, so twins are known to share same placenta, amniotic sac, and fluid, but they have different umbilical cords. Now, they share everything except the umbilical cords, which can easily become entangled in a single sac. Unfortunately, there is a high rate of stillbirths because of this kind of thing, accidental convulsion of the umbilical cord. So fraternal twins are the results of two eggs being fertilized, while identical twins are the result of one egg being fertilized and split. So this means identical twins must be same gender due to they having the same DNA. तो ये fraternal twins के केस में prelims में याद रखना क्या होता है, और मोमो प्रेगनेंसी क्या होता है ये याद रखना। तो ये पूछेंगे, प्लेसेंटा, एमनियोटिक सैक, फ्लूइड, ये सब सेम है। सॉरी। देन स्मार्ट PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ना बायोमेट्रिक स्कैनर्स ये सब बहुत देर से चल रहा है एफर्ट, तो अभी उसी को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है। लेट्स सी। So all states and UTs should make earnest efforts to implement it at the earliest. Smart PDS, what is this? It's a system where ration cards are issued to the beneficiaries of the public distribution system, and it is given through the FPS on production of the smart ration card. कार्ड बना दिया छोटे वाला, ठीक है। Sorry about the coughing, I can't help it. So major initiatives are undertaken by Government of India to strengthen the PDS in India.
which includes the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोविड-19 के बाद चलाई थी और ये अभी भी कंटिन्यूड है, along with that one nation one ration card जो माइग्रेंट लेबर के लिए बेनिफिशियल है, and promoting millets and PDS क्योंकि 2023 is the international year of millets also, yeah, as being observed by FAO, so that's why हम PDS के अंदर ही प्रमोट कर रहे हैं और ये इंडिया की रिक्वेस्ट पे ऐसा हुआ, as you know. Okay. Then पोर्टर प्राइज 2023, जब भी ऐसा कुछ प्राइस के बारे में पढ़ो पहले देखो कौन देता है, who gives, okay, then for what and who received, बस ये तीन चीजें चाहिए होती हैं किसी भी प्राइस के लिए. So Union Health and Family Welfare Ministry has received the Porter Prize 2023 for government strategy in managing COVID-19. And क्यों दिया गया, किसने दिया, अब ये रह गया. It is named after award-winning economist Michael E. Porter, and he has brought the economic theory and strategy concepts to bear on many of the most challenging problems faced by corporations, economies, and societies. So that is the Porter Prize. So इतना ही याद रखना है बस, कौन सी मिनिस्ट्री को मिला. Chatbot. See, you are usually interacting with some website. If you are interacting with the Telegram channel and it's automatically there, a chatbot is there. So any interactive voice recognition system and interactive typing system, ITS. These are the two kinds of chatbots. This is audio, this is text. Two kinds you have. Okay. So it's a computer program designed to simulate the conversation with humans or human users, maybe through text-based interface. That's a chatbot. तो अभी माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन के अंदर एक चैटबॉट आ गया, ये दिख रहा है इधर, दिस इज द चैटबॉट. I hope it is visible. Yes, sir. Yeah, you just turn it on and then it's there. I don't want to turn it on. Okay. Then microbiome linked to autism. So it is found that gut microbiome composition in human implicates several diseases, including autism, Crohn's disease, etc. Gut microbiome और gut microbiota पेट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, including bacteria, archaea, fungi, and viruses that live in the digestive tracts of humans, they affect the body from the birth throughout the life by controlling the digestion of food, immune system, CNS, and other bodily processes. इतनी चीजें हैं जो सिर्फ खाने से ठीक की जा सकती है ना, तो ये भी उसी के साथ कोरिलेटेड है. हम बहुत सारे अपने हेल्दी गट बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं विद टाइम, एंड उसके बड़े सारे तरीके हैं करने के. आप बार बार अगर कॉफी पी रहे हो या बार बार कुछ भी ऐसी, इवन पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहल, so there are a lot of troubles through which this can be done. Healthy bacteria, as you know, dahi lassi, so that is good for you, that's the one that you can add. And green veggies, so they will add good bacteria to you. So there is definitely a good bacterial balance that you need to have in your stomach, and that will prevent many diseases. Now, what is autism? So it is basically ASD, autism spectrum disorder, and there's the group of neurodevelopmental disorders. Brain doesn't get developed very well. Okay, so 3 साल के बाद आमतौर पे पता चलता है, 3 साल में साइंस आने शुरू हो जाते हैं. It is not mental retardation, as people with autism may show excellent skills in spheres like art, music, writing. So even they are able to communicate well. They live up to be 30-35 years of age, very healthy, no problem. ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है हमारे पास. It is not curable. Symptoms can be addressed with appropriate interventions like evidence-based psychological interventions, behavioral treatment, rehabilitation. That's that. Very difficult to deal with because I've seen one of my friends, her brother was autistic, and now her brother is 30 years old, 32 years old, and lives with the parents. पहले तो थोड़ी बहुत, जब तक she was unmarried, she was able to take care of her, send her to school, even try to teach him something.
बेसिक्स क्लास 5th 6th तक किया, लेकिन till then it was okay, but then not able to pick up the examination thereafter. लर्निंग एबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी बिल्कुल ही नहीं होती। बहुत ही कुछ चीजें वो कहेंगे तो आपको समझ आएगी, बाकी लोगों को तो वो शायद वो भी समझना है। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज है ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के साथ, तो दैट्स हाउ इट इज। नाउ व्हाट इज द लिंक दैट दे हैव डिस्कवर्ड? द ह्यूमन microbiome, sometimes called as the forgotten organ, plays a significant role in the host of processes including growth, development, physiology, immunity, nutrition, and disease. So generally we, that's why it is called forgotten organ. What is happening? So as a result, fixing the gut in ASD can reduce the toxic burden, including that which moves the blood-brain barrier, or help complete the necessary neurotransmitter synthesis pathways. So essentially, the microbiome being disrupted by various problems, maybe genetic, maybe metabolic. So there can be modulation that can be done. That's what they're saying. What are the initiatives related to ASD? So world level पे there is a UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and that includes autism. And in India, we got Right of Persons with Disabilities Act 2016. Okay, and it's a part and parcel of Act Article 21 now. Then WHO had a resolution on comprehensive and coordinated effort to management of ASD, because that's all you can do. You cannot cure it. इनमें से सिर्फ ये दो याद रखने. Okay. Moon dust as a solar shield. So dust as a solar shield, there is a particular proposal which is sent. Let's see. So they proposed regular transport of moon dust to a gravity point, that is a Lagrange point, between Earth and Sun to temper the ravages of global warming, and they called it solar radiation management. कुछ नहीं है, कह रहे इधर अर्थ है, इधर सन है, इधर मून है, बीच में लैग्रांजे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से थोड़ी डस्ट यहाँ छोड़ के आओ टाइम टू टाइम, ताकि ये जो सनलाइट आ रही है थोड़ी सी डस्ट में से फिल्टर होके आए। कम सनलाइट आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। so it's like filtering solar radiation to keep Earth from overheating. Okay. इसका क्या वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं? जब भी वॉल्केनिक डस्ट या पायरोप्लास्टिक मटेरियल बाहर जाता है तो भी ऐसी इसी तरह का कूलिंग इफेक्ट होता है, क्लाउड से भी होता है, तो उसी को वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं। बट कैन वी रियली यूज दिस टेक्निक? What are the consequences? So spraying dust in the stratosphere may cool the summer but can lead to widespread droughts across the earth. Why? Summers होंगी तो लो प्रेशर हाई प्रेशर वो सब क्रिएट होगा ना, हीट होना भी तो जरूरी है ना। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वहां पे विंड्स आएंगी मॉनसून रेन, तो उसका क्या करेंगे? इसलिए वी कैन नॉट गो एक्सट्रीम। सॉरी। Then brain-inspired image sensor can detect minuscule objects. So Indian Institute of Science has shown that a brain-inspired image sensor can go beyond the diffraction limit of light to detect the minuscule object such as a cellular component or a nanoparticle invisible to the current microscopes. What is the brain inspiration that they're taking up? Let's see. So this is called as, it combines optical microscopy with neuromorphic camera and machine learning algorithms, which represents a major step forward, pinpointing objects smaller than 50 nanometers in size. Okay. Neuromorphic camera mimics the way human retina converts light into electrical impulses. So generally, in photography, what we do is we just take the light through a lens and then put it on a sensor. That sensor
then converts it into some kind of a electric signal for a graphic engine to reproduce the similar kind of image on the other side. This is the general way. Now, this particular sensor is being meant in such a way that it can, replicate human brain. Okay. In a conventional camera, each pixel captures the intensity of light falling on it, and these pixels are pooled together to reconstruct the image of the object. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? Each pixel operating independently, generating sparse and lower amount of data. The process is similar to the human retina works. So यहाँ पे डेटा, हर पिक्सल अपना डेटा क्रिएट करेगी, वहां पे वो पिक्सल अपनी सिर्फ एक लाइट कैप्चर करती है और दूसरी तरफ लाइट थ्रो कर देती है, फिर सेंसर अलग से स्टडी करता है। तो वहां पे पिक्सल अपने आप में एक सेंसर है, ऐसे समझ लो। ओके, नाउ व्हाट इज द stochastic process? So in this process involving the operation of chance and is also known as the random process. For example, in a radioactive decay, every atom is subject to fixed probability of breaking down in a given time interval. तो stochastic process उसको बोलते हैं जो process of chance होता है। Let's say अब एक यूरेनियम 235 1 kg डीके हो रहा है, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी टाइम पे जाके डिके होने ही। Diffraction limit. So this is the fundamental physical limit on the ability of an optical system to resolve or distinguish between two closely spaced objects. ये डिफ्रैक्शन लिमिट किसी भी कैमरा की रेजोल्यूशन के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हाई रेजोल्यूशन, तो उसका ये मतलब होता है कैन इट रिजॉल्व टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस. Okay, the smallest resolvable distance between two point sources of light is determined by the size of the aperture of the lens used to observe the objects, as well as the wavelength of the light being used. In practical terms, this means even with a perfect lens or telescope, there is a limit to how much detail can be resolved in an image. जैसे कई बार बहुत हाईली डिटेल्ड इमेजेस होती है, वो सैटेलाइट से जब लेते हैं तो हमें दो अलग अलग कार्स अगर खड़ी हैं तो वो नजर आ जाएगी कि दो गाड़ियां। दिस काइंड ऑफ resolution or is available. So that is basically the diffraction limit. Right now, the GPS that you are using on your phone has a diffraction limit of about 6 meters. Okay, so any two objects which are 6 meters apart, you'll be able to clearly identify. जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जो मिलिट्री के लिए अवेलेबल है, वो तो 2 और आई थिंक 1 feet तक अवेलेबल है. 1 feet means if two human beings are walking around, you will be able to notice. Okay. Then Anopheles stephensii, deadly malaria species. हमें अभी तक फीमेल एनाफिलीज के बारे में पता था, अभी ये लेटेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो deadly malaria vector from Asia has been detected in Kenya. Vector means something that helps in transportation. So Kenya is now the 6th and the latest country in Africa to report the invasion by the deadly malaria species. It originated in Southeast Asia, West Asia, and Arabian Peninsula, expanding its geographical range over the last decade. Significant threat because, like many other malaria-causing mosquito vectors, they primarily breed in rural areas. This is highly adaptive and can thrive in urban environments as well. Sorry. In India, there is a lot of effort for malaria elimination. Even there is a national framework for malaria elimination, 2016, by Ministry of Health and Family Welfare. But we have to be very regular and rigorous at our own home front first, be able to regulate malaria, because nesting ground is provided at your home. So एक तो ये याद रखना फिल्म्स के लिए, और एक मलेरिया वेक्टर याद रखना है, इंडिया में नहीं पहुंचा है अभी, ठीक है, एनाफिलिस स्टेफेंसी, बाकी कंट्रीज में है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट विद प्रिसिशन. देखिए, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हम दो में से एक चीजें ढंग से देख सकते हैं, या तो उसकी पोजीशन या फिर उसका मोमेंटम. एक को ढंग से देख सकते हैं, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा.
This is governed by something called as Heisenberg's uncertainty principle. Okay. One of the two things will remain uncertain, either position or momentum. Now, let's see electrons' magnetic moment with position, how they are doing it. So, physicists have made a groundbreaking achievement in metrology by measuring electrons' magnetic moment with the record-breaking position. It is significant because it provides most precise tests so far of the standard model of particle physics. So the measurement was reported to be 0.13 ppt, which is 2.2 times more accurate than the previous best record 14 years ago. Essentially, आपको इसमें से पता क्या होना चाहिए, ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो अभी भी वो मोमेंटम पता कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन नहीं पता करेंगे, सिर्फ मोमेंटम के बारे में जानकारी लेंगे. ओके, so what is the standard model of physics? So it says it describes that the properties of subatomic particles and classifies them into groups and determines how they're affected by three of the four fundamental forces like strong nuclear, weak nuclear, and electromagnetic. But it can't explain gravity. Gravitational force का effect उनके ऊपर नहीं समझ आता है इसको. It predicted the existence of Higgs boson, which was discovered in 2012 and successfully predicted the properties of many particles, making it one of the most successful theories in physics. Higgs boson is an elementary particle, also called as God particle. CERN research सारा इसी के ऊपर था अभी तक. It cannot be broken down into smaller components, no charge, spin, or other intrinsic properties, but it does have mass. The mass is around 125 billion electron volts. That's about 133 times the mass of a proton. So, large or huge mass. Despite its success, SM is unable to explain certain phenomena such as the excess of matter over antimatter in the universe. Dark matter and dark energy. ये सब नहीं explain कर पा रहे. उस टाइम पे इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था. अभी dark matter, dark energy क्या होता है? So the content of the universe is widely consists of three types of substances: normal matter, dark matter, and dark energy. It is in popular concordance model universe. 70% of the cosmos is thought to be of dark energy. 25% is dark matter, and 5% is normal matter. Normal matter is something that you can see: stars, planets, human beings, and every other visible object in the universe. Dark matter consists of mass of galaxies and galaxy clusters and is responsible for the way galaxies are organized on the grand scales. Dark energy, this is basically the mysterious influence driving the accelerated expansion of the universe. Essentially, Big Bang theory के बाद भी अभी universe जो है वो expansion phase में है, तो जो उसको drive कर रहा है, that is called dark energy. And that is what makes 70% of the cosmos, empty space. Okay. So what is electrons magnetic moment? ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी के लिए इस पे ज्यादा ध्यान देना है. डार्क मैटर, डार्क एनर्जी. पुराने कुछ क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने इस कॉन्टेक्स्ट में पूछे. अगर आपको ये सब पढ़ना अभी वियर्ड लग रहा है तो क्वेश्चंस देखो. So the term event horizon, singularity, string theory, standard model are sometimes seen in news. तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है ऐसा पूछते हैं. तो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, study of the solar and the lunar eclipse, placing satellites in the orbit of the Earth, origin and evolution of the living organism of the Earth. तो simplest answer क्या बना? A. Okay. The efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past. 2012 में क्योंकि इसकी डिस्कवरी हुई तो 2013 में क्वेश्चन था. देखिए, what are the importance of discovering these particles? So if we find Higgs boson, what we will know? It will enable us to understand as to why elementary particles have mass. That was the basic research behind Higgs boson. They said that Higgs boson has something of a field, Higgs field. Okay?
when a subatomic particle it passes through this field, it gains mass. हिग्स फील्ड में से जैसे ही वो पास करता है तो हर सबएटॉमिक पार्टिकल का मास बन जाता है. पहले उसके अंदर मास नहीं होता, अब फिर उसके अंदर कुछ एक मास आ जाता है. दैट्स द इंटायर रिसर्च. ओके. Recently, scientists observed a merger of giant black holes billions of light years away from the Earth. What is the significance of this observation? So, gravitational waves were detected. That was the significance. Essentially, because of this merger, one thing that was coming in news time and again was gravitational waves. Gravitational waves, they are like this only: compression, rarefaction, then again compression, and the body that they pass through उसको भी इसी तरह से compression और rarefaction करते हुए निकल जाएंगे वो. So that is gravitational waves. Okay. So this was the significant discovery behind it. So far so good. समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Then phosphor gypsum in National Highway construct. So NHAI along with Department of Fertilizer, Ministry of Chemical Fertilizers will take up field trials of NHAI project to use phosphor gypsum in National Highway construction. ये क्यों करना चाहते हैं? It's a waste product from manufacturing fertilizers, emits radons and radioactive gas. It also contains radioactive elements like uranium, thorium and radium. So अब इसको waste को कहीं ना कहीं तो use करना है, तो इसलिए सड़कों में use करने की कोशिश हो रही है. So this is also encouraging use of waste plastic in road construction, which has been tested very successfully. So fly ash already हम use कर रहे हैं. That is generated by coal combustion or coal-fired thermal power plants. And this fly ash comes from the electrostatic precipitators. वहाँ पे जो चिमनीज होती हैं उसके अंदर लगता है. तो सड़कों के निर्माण के अंदर ये सब यूज करेंगे तो उससे 2-3 बेनिफिट्स हैं. One, they are weathering resistant. They don't get affected much by water. Second, they make good roads that can be easily leveled. The construction quality remains good. Otherwise, the coal tar and everything that we that we were using earlier, that creates certain troubles. Then Dickinsonia fossil. So this has been in news. वो जो आपसे prelims में पूछेंगे ना तो सिर्फ इतना ही मेंशन करेंगे Dickinsonia. ये क्या होता है? Okay. So it's an extinct species that scientists reportedly discovered from India's Bhimbetka rock shelters in 2021 have been found as a false alarm. So this is the Dickinsonia fossil. Let's see. The Dickinsonia is an extinct primitive animal that inhabited the seabeds of around Australia, China, Russia, Ukraine in the Indiacan period, that is 600 to 500 million years ago. So it is believed to be one of the earliest animals to have existed on the earth. Bhimbetka rock shelters. अब इंडियन कल्चर जब हम पढ़ते हैं या स्टोन एज जब पढ़ते हैं अलग अलग एजेस में, तो ये भिम्बेटका केव्स हमेशा न्यूज में रहते हैं. तो प्रीलिम्स में इस बार भी फिर से इनके आने का चांस है. So they are archaeological sites in central India that span the prehistoric, Paleolithic, Mesolithic as well as the historic periods. Historic कहने का मतलब जिसमें evidence है कुछ ना कुछ. It exhibits the earliest traces of human life. It's a UNESCO World Heritage Site. There are about 750 rock shelters. It was discovered by V.S. Wakankar, 1957. Raisen district, Hoshangabad and Bhopal, मध्य प्रदेश. पेंटिंग कौन कौन सी है भिम्बेटका के अंदर फिल्म्स के लिए याद रखना है. सो आमतौर पे जो ये पेंटिंग थी देवर ऑफ द हंटिंग सीन्स, याद है हंटिंग सीन्स. ओके. ओल्डेस्ट केव पेंटिंग इन बेटका इज अबाउट 12,000 years ago as per radiocarbon dating. ओके. Amazon to join ONDC. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ONDC लॉन्च किया था, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. तो अब Amazon उसको ज्वाइन कर रहा है. क्यों?
In 2022, Microsoft became India's first big technology company to join the network with an intention to introducing group buying in Indian market through social e-commerce. So ONDC के अंदर जो छोटे दुकानदार हैं वो चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, like this. It's an open e-commerce protocol set up by the Ministry of Commerce, Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Under ONDC, it is envisaged that a buyer registered on one participating e-commerce site may purchase goods from a seller on another participating e-commerce site. For example, Flipkart. So presently, buyers and sellers have to be on the same app for a transaction which happens through the same platform. आप अगर Amazon पे खरीद रहे हो तो Amazon से खरीदोगे, Flipkart से खरीदोगे तो Flipkart से खरीदोगे. It's like this. You cannot cross buy things. अभी ये हेल्प क्या करेगा? ये हेल्प करेगा मार्केट कंपटीशन को लेवल करने के लिए. ONDC जितनी भी कंपनीज इसको ज्वाइन करती जाएंगी, सो अकॉर्डिंगली वो सारी एक लेवल प्लेइंग फील्ड में है. सब अपना अपना प्रोडक्ट देंगे, इट डजंट मैटर. जिसका भी प्रोडक्ट सेल होगा उसको कमीशन मिल जाएगा. जेम्स वेब टेलीस्कोप, सो 6 मॉन्स्टर गैलेक्सीज. अब हमें ये गैलेक्सी से कुछ लेना देना नहीं है प्रीलिम्स में, सिर्फ ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये तो करता रहे कुछ ना कुछ. फाइन, so just this much. So this is a collaboration between NASA and European Space Agency and the Canadian Space Agency, and this was launched in December 2021. So it's very recent. Last year prelims में नहीं आया, इस साल पूछना बनता है. It is currently at a point in the space between known as Sun-Earth Lagrange point, that is L2 Lagrange point, approximately 1.5 million kilometers beyond Earth's orbit around the Sun. And this is one of the 5 Lagrange points between Earth and Sun. What it helps is a space where gravitational forces of the two body systems produce an enhanced region of attraction and repulsion. Gravitational waves, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से चलती है. जहां पे ये वाला पॉइंट होगा वो लैग्रेंज पॉइंट बनेगा. Compression, rarefaction, increased, decreased, like this. It's the largest and most powerful infrared telescope ever built, the successor to the Hubble telescope, and it can see backward in time for just after Big Bang by looking for galaxies that are so far away that the light has taken many billion years ago to get from those galaxies to our telescope. That's how it can look backward in time. Imagine. So these things about James Webb Telescope very important. Even 2022 में मेंस में क्वेश्चन आया. देखिए, launched on 25th December 2021, James Webb Telescope has been much in news since then. What are the unique features? What are the key goals of its mission? Potential benefits it holds for the human race. अब देखिए, हर साल का मेंस जो है ना, वो अगले साल के प्रीलिम्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देता है. ऐसे ही हर साल का प्रीलिम्स अगले आने वाले मेंस के लिए थोड़ी जानकारी देता है. तो ये वाला ध्यान रखना क्वेश्चन इस पर. इंडिया एनर्जी वीक, तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, इंडिया एनर्जी वीक या कुछ डे या कुछ भी, तो देखना होता है किसने ऑब्जर्व किया, कहाँ पे हुआ, कोई थीम था या नहीं. तो February 6 को शुरू किया इंडिया एनर्जी वीक बेंगलुरु. PM launched the E20 fuel at 84 retail outlets. So that is 20% ethanol blended fuel. That's what was started. And flagged off the Green Mobility Rally organized by HPCN. So essentially E20 fuel launch हुआ. ये important है बस. Then combating filariasis. So Ministry of Health and Family Welfare has launched the nationwide mass drug administration campaign aimed at ending filariasis disease. Aims at eliminating filariasis by 2027. बस इतना याद रखना. कौन कौन से हाई डिजीज बर्डन एरियाज हैं नहीं पता. फिलारियासिस होता क्या है? इट्स अ थ्रेड लाइक वर्म नोन एज फिलारिया. उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है. How it happens? By infected mosquito bites. And lymphatic filariasis is caused by the infection with the parasitic classified as
nematodes or roundworms from the family Lariovidia. बस ये 3 चीजें याद रखना. वर्म का नाम क्या है, वेक्टर कौन सा है, और डिजीज क्या होता है. राउंड वर्म्स होते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके ऊपर काम कर रहा है. इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मीन्स के लिए है ये वाला सारा, फॉर साइंस एंड टेक. ओके. देन माइक्रो एलईडीज. So Apple is reportedly working on new display technology called as micro LEDs, so which is considered as the next big thing in the display industry. So they are self-illuminating diodes that have brighter, better color reproduction than the OLEDs in displaying technology. So Apple is always known to bring something new into the technology world. I mean, but for the last iPhones, I think from iPhone 10 onwards, nothing new has actually come. Yeah. So now this may be the best next thing. So what is micro LED? So this is based on use of sapphires, which are known for their ability to shine on their own indefinitely. So the technology involves the use of tiny light emitting diodes that are packed tightly together to create a brighter and high quality display. So unlike OLED, micro LED displays use inorganic materials such as gallium nitride, very costly. That's why the phones are now going to get even costlier. So it is as small as cutting a centimeter of hair into 200 smaller pieces. So that is a micro LED. Okay. The benefits: better color reproduction, limitless scalability. तो उसमें कुछ रेजोल्यूशन का इशू नहीं है. Bezel free, ratio free, even size free. The ability to freely resize the screen in any form for practical usage. Self-emissive micro LEDs that individually produce red, green, and blue without needing backlighting. अभी जितना भी OLED है उसमें backlight OLED होता है, उस वजह से एनर्जी काफी कंज्यूम करता है. यहाँ पे एनर्जी कम कंज्यूम करेगा. इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आती है ना, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे. लेबोरेटरी लेवल पे तो तुम ही कर सकते हो. So manufacturing micro LEDs is highly complex, requires precise control, and definitely very high cost. Gallium nitride ही बहुत costly है, and they require a lot of power to operate, which can make them less energy efficient than the other display technologies. But this is always manageable. So in future, let's see if that happens. So micro LEDs now, prelims में क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो ये यूज ऑफ सफायर, दूसरा गैलियम नाइट्राइड, the inorganic material used for making LEDs. Okay. ये वाले क्वेश्चन जो पुराने LED OLED पे आ रखे हैं वो देख लेना. Then H5N1 avian influenza. So recent reports of H5N1 being transmitted between mammals have raised concern about its potential to cause a human pandemic. Latest. Scientists are investigating the potential spillover event after a mass mortality event that killed over 700 seals along the Caspian Sea. अलग अलग तरह के एवियन इन्फ्लुएंजा आते हैं, देखिए कौन कौन से हैं. प्रीलिम्स में ये ध्यान रखना है इसका. So the influenzas are of A, B, C and D. A types so means avian, ऐसे याद रख लेना. So they affect a wide range of animals including birds. B infects humans mainly. C so infect humans and pigs, but more rare than type A and B. Then influenza D infects cattle. अभी हमारे पास एवियन दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस कौन कौन से हैं? देन स्वाइन, ये ए के ही सब टाइप्स है सारे. ये बी और सी डी के सब टाइप्स नहीं दिए गए हैं, ये सिर्फ ए के सब टाइप्स है. तो H5N1 अभी ये चल रहा है, H3N2 लेटेस्ट.
ठीक है, कोविड-19 इसमें नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन होती है SARS, SARS-CoV-2, दैट इज द टेक्निकल नेम। ओके, ये H1N1 ज्यादा कॉमन है, H3N2 ज्यादा कॉमन है, अभी ये दोनों चल रहे हैं, ये दोनों स्वाइन फ्लू के वेरिएंट्स हैं। ठीक है, ओके, so subtypes can be classified as high path or low path based upon the ability of the specific virus strain to kill chickens in the lab setting. Highly pathogenic or low pathogenic. Okay. Diodar meteorite. So what is this? Let's see. Or Diodar meteorite. So scientists from the Physical Research Laboratory, Ahmedabad, are claiming that the meteorite that crashed two villages in Banaskantha, Gujarat, on 17th August 2022 has been identified as an obrite. So, ये meteorite का नाम है obrite. Fine. The PRL group used a gamma ray spectrometer to determine the mineral composition of obrite. The group also classified the meteorites as monomict brachia. Prelims में ना ये पूछ सकते हैं आपसे, monomict brachia was in news. ये है क्या? या obrite पूछ सकते हैं, इनका नाम बस इतना सा याद रखना। ठीक है, obrite meteorite is a coarse-grained igneous rock that formed in the oxygen-poor conditions, containing exotic minerals not found on Earth. उसको बोलते हैं obrite meteorite. एक ही चाहिए, ठीक है, बस बहुत है, ये दो चीजों के बेस पे आपको क्वेश्चन आएगा। मीटोराइट क्या होता है वो तो ज्योग्राफी में आपको पता है। देन quasi crystals. So scientists have discovered third natural source of quasi crystals in sand hills of the north central Nebraska, USA. What is a quasi crystal? So these are fascinating materials that possess unique combination of properties. They are a testament of beauty and power of irregularity in the natural world. What do they do? So unlike traditional crystals, the atoms in the quasi-crystals are arranged in a pattern that repeats itself at an irregular interval. Crystal में basically क्या होता है? Pattern repeat is regular. Here it is irregular. The deviation from the normal arrangement of the atoms in solids makes quasi-crystals a symbol of the power of irregularity. Common crystals, they are regular. What they can do? What's their utility? So they are used in manufacturing non-stick frying pans, needles for acupuncture and surgery, dental instruments and razor blades. So that's the usage of quasi crystals. बस एक ये लाइन याद रखनी है और एक ये होते क्या है ये याद रखना, बस काम खत्म। Chat GPT powered WhatsApp chatbot. So now Ministry of Electronics and Information Technology, Bhashini, is working on a Chat GPT powered WhatsApp chatbot to help Indian farmers learn about various government schemes. So Bhashini, what will it do? So this is a Bhasha interface for India, and it will use AI-led language translation platform. जैसे Google के अंदर already एक language translation है, AI के basis पे अब उसको थोड़ा सा strong कर सकते हैं, fast कर सकते हैं, reliable बना सकते हैं. That's what we're trying to do. उसको चैट जीपीटी के साथ कंबाइन कर देंगे तो क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे, वो चैट बॉट बन जाएगा अलग से, जो कि लोकल लैंग्वेजेस में काम करेगा। इतनी सी बात है बस, ठीक है, बस प्रीलिम्स में इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं। कंसर्न्स वगैरह ये सब मेंस की बात है, प्रीलिम्स में नहीं। डीओटी अपडेट्स डेफिनेशन ऑफ अ ब्रॉडबैंड, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। सो इट सेज minimum 2 Mbps should be the speed if you have to call something as broadband. 2013 में मिनिमम स्पीड 512 kbps रखी गई थी, ठीक है, बस इतनी सी बात, और नहीं कुछ टेंशन लेनी। करंट ब्रॉडबैंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी आ रही है, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। देन डीप सी फिश कंजर्वेशन. So Supreme Court has given permission to fishermen using
purse seine fishing gear to fish beyond territorial water and within the exclusive economic zone, that is 200 nautical miles of Tamil Nadu, but observing certain restrictions. This comes in the backdrop of banning purse seine fishing by Tamil Nadu government in February 2022. The Supreme Court has restricted the purse seiner to fish on 2 days, Monday and Thursday, from 8 a.m. to 6 p.m., revoking a complete ban on imposed by Tamil Nadu government. प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा देखते हैं प्रीलिम्स के एंगल से बस इतना सा वर्कआउट चाहिए कि ये पर्सीन फिशिंग है किस जगह में ठीक है टेरिटोरियल वाटर से लेके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक है अब ये मीन्स का कंसर्न है व्हाट आर द कंसर्न्स इन दिस हमें चाहिए प्रीलिम्स में ये A purse seine is made of a long wall of netting framed with floating and lead line and having a purse rings hanging with the lower edge of the gear. Let me show you that will be easier. फिर याद रहेगा इस तरह का नेट होता है इधर वेट होता है ऊपर से गिराते हैं तो जितनी भी फिश होती है वो आ जाती है दैट इज अ पर्स सीन फिश आई थिंक दिस मेक्स इट लॉट क्लियरर okay Yes. this is considered to be efficient form of fishing widely deployed and it is used on open ocean to target dense pools of single species pelagic fish like tuna or mackerel so that's how it goes purse seine fishing end-to-end encryption. So Apple has announced that it will be increasing number of data points protected by end-to-end encryption on iCloud from 14 to 23 categories. इसका क्या मतलब? Let's see. First of all, what is end-to-end encryption? So it's a communication process that encrypts data being shared between two devices, whether it is Bluetooth or whatever. It prevents third parties like cloud service providers, internet service providers, cyber criminals from accessing data while it is being transferred. Okay. Now, according to database research by Apple, the total number of data breaches more than tripled between last 10 years. With end-to-end encryption, user data will be protected in case of data is breached in the cloud. आमतौर पे आजकल जो ज्यादातर हैकिंग है वो क्लाउड लेवल पे हो रही है डिवाइस लेवल पे कब हो रही है The cryptographic key used to encrypt and decrypt the messages are stored on the endpoints. The process of end-to-end encryption uses an algorithm that transforms the standard text into unreadable format. This format can only be unscrambled and read by those with decryption keys which are only stored on the endpoints and not with any third parties, including companies providing the service. तो अगर एप्पल चाहे तो वो भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता एक डिवाइस जब इनिशिएट करेगा दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो जो डिक्रिप्शन की है वो भी क्रिएट करेगा पहले यहाँ पे फिर यहाँ से इनक्रिप्ट करके भेजेगा तभी ये डिवाइस इसको पढ़ पाएगा इट्स लाइक दिस ओके दैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्शन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मीन्स के लिए प्रीलिम्स में नहीं चाहिए नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस So recently, Rajya Sabha MP raised concerns about national policy for rare diseases as it did not reach any patient with the rare disease even after several months since its introduction. So 2021 में इसको लॉन्च किया गया था National Policy for Rare Diseases. What is this? To increase focus on indigenous research and local production of medicine, lower the cost of treatment, screen and detect rare diseases at early stage. What are rare diseases? So there is categorization. First, group 1, which require one-time curative treatment. Group 2, which require long-term or lifelong treatment. Group 3, which a definitive treatment is available, but challenges are to make optimal patient selection for benefit, very high cost and lifelong therapy. Treatment available है लेकिन बहुत महंगा है बहुत मुश्किल है और सही बंदे को मिले या नहीं ये भी मुश्किल है ओके सो फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दी जा रही है
Those who are suffering from rare diseases listed under Group 1 will have financial support of up to rupees 20 lakh under the umbrella scheme राष्ट्रीय आरोग्य निधि. ये मिलेगा किसको? For people living below poverty line. And see, beneficiaries of such financial assistance would not be limited to BPL families, but extended to about 40% of the population who are eligible as per the norms of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. मतलब जिनका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011-12 में नाम आ रखा है, वो भी आ सकते हैं. Alternate funding is there. So it includes voluntary crowdfunding treatment by setting up digital platform for voluntary individual contribution and corporate donors to voluntarily contribute to the treatment of the treatment cost of the patients of rare diseases. So, Center of Excellence will be established. जिसके लिए 5 crore का allocation किया गया. National registry will be created for rare diseases. So that is what is being done. But that's the question कि इसको लेके भाई अभी तक एक भी बेनिफिशियरी नहीं आया. 2021 से लॉन्च किया गया था. क्या कर रहे हो? ठीक है. आपको प्रीलिम्स में क्या पूछेंगे? कौन सी मिनिस्ट्री है, ग्रुप कैटेगराइजेशन क्या है, बस काम खत्म. मैक्सिमम क्वेश्चन आया किसको अवेलेबल है, तो बीपीएल प्लस कुछ कैटेगरीज, तो दोज हु आर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सर इसका क्लेम किसको करना होता है, लाइक जो सरकारी सब्जेक्टेड है अस्पताल उनको वाले खुद करेंगे. खुद ही करेंगे. आप जैसे पीजीआई में जाते हैं ना, तो वहां पे एक विंडो है कि अगर आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर कवर्ड हैं तो दे विल प्रोवाइड यू. दैट्स इट. खुद क्लेम नहीं करना होता, वो खुद ही देते हैं. हाँ, आप नहीं करोगे, हॉस्पिटल वाले खुद क्लेम करेंगे, जैसे भी करना होगा. ऑलरेडी अभी क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर है. लेकिन कुछ रेयर डिजीजेस के लिए हो सकता है कि ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, 5 लाख में बात ना बने, तो इस वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है. यहाँ पे 20 लाख तक का कवर है पर पर्सन. ओके. जिस तरह के आजकल के हॉस्पिटल बिल्स है ना, even if a person goes through a normal surgery, I think 7 to 10 lakh rupees should be a normal expense for any person undergoing any surgery these days. After that, there is a outpatient care and maybe at home care and वो सब करते करते मिनिमम जो आपका एक्सपेंडिचर है नॉर्मल सर्जरी में 10-15 लाख रुपए का हो जाता है. ठीक है, अगर ढंग के अस्पताल से करा रहे हो तो उसको देखते हुए ये वाले एक्सपेंडिचर ठीक है, गवर्नमेंट को इस तरह की कवरेज देनी चाहिए. ओके. Fusion energy breakthrough. See, we know fission and fusion. Fission is essentially splitting of a bigger nuclei into smaller one, and fusion is coming together of 2 smaller nuclei into a bigger one. As of now, we only know about hydrogen fusion, and that creates helium plus a lot of energy. So this is the only fusion we know of. The only problem about this fusion is to get it started. It requires a lot of start energy. So for that, we are building new and new technologies. So recently, a few scientists in the Lawrence Livermore facility, the US, have achieved a net gain in energy from a nuclear fusion reaction. Net gain in energy का मतलब यही है कि यहाँ से जो एनर्जी इसको स्टार्ट करने के लिए दे रहे थे, एनर्जी नंबर 1, और जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई 2, तो ये 2 वाली ज्यादा होनी चाहिए. China's artificial sun, the experimental advanced superconducting tokamak, ये उसका नाम है, उसमें याद रखना है, replicates the nuclear fusion process that is carried out by the sun. अभी यूएस भी इसी को वर्कआउट कर रहा है. So experiment क्या है? The experiment forced a minuscule amount of hydrogen into a peppercorn-sized capsule, for which the scientists used a powerful 192 beam laser that could generate 100 million degrees Celsius of heat, and it is also called as inertial fusion. Okay. At some places, including international collaborative project in southern France called ITER, that is International Thermonuclear Experimental Reactor, in which India is a partner, prelims mein yaad rakhna.
वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस. तो या तो लेजर के थ्रू आप कर सकते हो फ्यूजन, या मैग्नेटिक फील्ड से कर सकते हो. The laser beam was hotter than the sun's center and helped to compress hydrogen fuel to more than 100 billion times that of the Earth's atmosphere. Under pressure, these forces, capsule started imploding on itself, that means fusing, leading to fusion of hydrogen atoms and release of energy. इसमें problem रहता है controlling the energy once it is released because it is huge. Okay. इसलिए हम अभी इतने छोटे स्तर पे करते हैं. ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे करेंगे तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा. ओके, सो एक तो प्रीलिम्स में ये याद रखना, ITER, इंडिया इज अ पार्टनर, चाइना का टोकोमैक ईस्ट फुल फॉर्म, एंड दैट्स दैट. ये दो चीजें हैं जो प्रीलिम्स में आने के चांस है. ओके, बेस एडिटिंग. So recently, scientists in UK have successfully tested a new form of cancer therapy called base editing for the time in a patient with T-cell acute lymphoblastic leukemia. All. What is base editing? So bases are languages of life. Adenine, thymine, guanine, uracil, cytosine. याद आ गया? DNA और RNA के अंदर ट्रिपलेट बेसिस होते हैं. Okay. Just as letters in the alphabet spell out the words that carry meaning, billions of bases in our deoxyribonucleic acid spell out the instruction manual for our body. अब इनकी अगर एडिटिंग करेंगे तो इससे कैंसर ठीक हो सकता है. क्यों? कैंसर डेवलप ही क्यों हुआ एट द फर्स्ट स्टेज? सी, फ्रॉम DNA based upon these bases, something is transcribed or written on the tRNA, है ना, या mRNA, you can say messenger RNA. So this goes into the ribosome where protein synthesis occurs based upon this software instruction which has come from DNA. This protein synthesis is what is forming new cells or new whatever in your body. Yes. If this is irregular, you are having irregular growth of cells in your body, and which is called cancer. You get the basic point? Yes or no? Yes. So we can just identify that which one of these is causing trouble. Now we can replace that, okay, that particular strain, and then reduce that problem. So that is the entire deal. Okay. Each genetic code uses 4 nucleotides bases of DNA, that is adenine, cytosine, guanine और thymine. Uracil जो होता है वो RNA में होता है, DNA में नहीं होता. Okay. Clustered, regularly interspaced short palindromic repeats, that is CRISPR technology, is one of the most popular approaches that allow genes to be altered, thereby fixing their errors. तो हम इनमें से कुछ भी एक निकाल के दूसरा डाल देंगे. They are like molecular scissors के नाम से फेमस है. Molecular scissors प्रीलिम्स में पूछ भी लिया उन्होंने पहले. ठीक है, तो CRISPR या Cas9, so it basically edits genes by precisely cutting DNA and then letting natural DNA repair process take over. The system consists of two parts. First is the Cas9 enzyme and a guide RNA. Cas9, so there's a CRISPR associated endonuclease or enzyme that acts as a molecular scissor to cut DNA at a specified location by a guide RNA. Guide RNA, what it does, it's a type of RNA molecule that binds to Cas9, specifies based on the sequence of gRNA the location at which Cas9 will cut the DNA. तो दो चीजों का मिक्सचर है CRISPR, एक गाइड आरएनए का और एक Cas9 का. गाइड आरएनए उसको लेके जाएगा, Cas9 कट करेगा. So you can just cut, copy, paste whatever you want, wherever you want. That's the technology that's we have achieved already. Based on this, we can do whatever kind of gene editing we want to do, and this therefore helps in cancer treatment also. Okay. So 2019 में क्वेश्चन आया था, Cas9 protein is often mentioned in news. Why?
The molecular scissor used in targeted gene editing. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन था. Okay. Minimum density amorphous ice. So scientists at University College London have recently created a new type of ice that matches the density and structure of water. आमतौर पे density of ice should be less or more than water. Less. That's why ice floats on water. The ice is called medium density amorphous ice. The ice was created by shaking regular ice in a smaller container with a centimeter wide stainless steel balls at a temperature of minus 200 degrees Celsius to produce a novel variant. The ice appeared as a white granular powder that stuck to the metal balls. Okay. Normally, when water freezes, it crystallizes and its molecules are arranged into familiar hexagonal solid structures. That is, ice is less dense than its liquid form. But अभी यहाँ पे क्या होगा? This has more density or similar density to its liquid form. तो बस इतना सा है. Generative artificial intelligence. So इसमें सिर्फ ये पता करना है कि ये है क्या. What is generative? Let's see. It is a rapidly growing branch of AI that focuses on generating new content such as images, audio, text based on the patterns and rules learned from data. अभी क्या है ना, कुछ भी नया हम ही देते हैं, ह्यूमन बीइंग से इनपुट आते हैं, उसके बेसिस पे आगे कुछ क्रिएट होता है, मिक्स एंड मैच. ये खुद से न्यू कुछ क्रिएट कर पाए, वो हम कोशिश करें. This can be attributed to the development of advanced generative models such as generated adversarial networks and variational autoencoders. जिसके बेसिस पे वो खुद लिख पाए. जैसे चैट जीपीटी में ये कोशिश किया गया. So while GAI is often associated with chat GPT and deepfakes, the technology was initially used to automate the repetitive process used in digital image correction and digital audio correction. Okay. So जैसे ऑटो करेक्ट आपके कैमरा में एक फीचर होता है ना, या अपने आप से इमेज एनहांसमेंट हो जाती है, तो उसके अंदर पहले यूज होता था. आजकल बहुत जगह पे एप्लीकेशंस है इसके. तो बस दैट्स इट. इट शुड बी एबल टू डू इट ऑन इट्स ओन. ओके. अब इसके ये जो अलग अलग से एस्पेक्ट्स हैं, डैल E2, डीप ड्रीमर, एम्पर म्यूजिक, एवा, ये सब नहीं चाहिए, छोड़ दो. okay? क्या प्रॉब्लम्स हैं, छोड़ दो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया क्या कर रहा है, ये थोड़ा देख सकते हैं. So there is a national strategy for AI. There is a national mission for interdisciplinary CPS, cyber physical systems. There is a AI research, analytics and knowledge assimilation platform. ये अभी हमारे ये तीनों चीजें थ्योरेटिकल लेवल पे एग्जिस्ट करती है. हम इनको लेके कुछ खास कर नहीं रहे हैं अभी. अभी सारे का सारा ध्यान किधर है ना, डिजिटल इंडिया. और विद इन डिजिटल इंडिया देयर इज वन पर्टिकुलर एफर्ट, इकोनॉमी एंड पीपल. दैट्स द सेकेंड एफर्ट. बस इसके बियॉन्ड नहीं अभी हम जा रहे. ठीक है. Then Google's Bard. This is similar to ChatGPT. It's an AI chatbot, Bard. Microsoft ने ChatGPT बनाया था. इनफैक्ट किसी ने ChatGPT बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया. Microsoft is good at buying things. You should remember that. ठीक है. Anything and everything somebody develops, Microsoft will buy. If it feels कि हाँ it is worth buying. Then यहाँ पे इन्होंने खुद डेवलप किया Bard. Okay. अब इनके क्या लैंग्वेज मॉडल है. So here it is. In ChatGPT, the information cutoff is at 2021. Limited है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे it is like none. अभी तक का जो भी information होगा वो रहेगा. Here biases of data and here biases of internet, they are there. Access is right now limited. I mean, you and I, maybe we cannot access Bard. Let's try and access right away. Bard AI. Bard और Brad. नहीं, ये तो कुछ नया अपने हिसाब से चला दिया कि तूने.
Google brand. Various things are going on. चलिए आगे बढ़ते हैं. बस अब इसकी ना बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए. जैसे लामडा क्या होता है, बस इसकी एक फुल फॉर्म देख लीजिए. इट्स अ लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन. दैट्स इट. चैट जीपीटी में जीपीटी क्या होता है? इट्स आल्सो बेसिकली a language processing model. Okay. Then Israel's sniffing robot with locust antenna. So scientists, they have developed a similar biological sensor here. जैसे कि locust का antenna होता है, तो it can smell. There's an acute sense of smell. That's all. ठीक है. इसके अलावा इन्होंने कुछ रिवील नहीं किया, तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता. It's just an innovation. Then CAR T cell therapy is this. So it is chimeric antigen receptor T cell therapy. पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए. क्या करेगा? मेन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर आर सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड सिस्टेमिक थेरेपी. दिस इज अ न्यू वन. So generally systemic therapy begins with chemo, which attacks the cancer cells due to their fast growth, and chemotherapy drugs have limited success because of their significant side effects. And the next advancement of targeted agents is immunotherapy. So this works by binding to specific targets on the cancers or the immune cells, supporting its growth. This approach is less toxic as it affects fewer non-tumor cells. अभी T cell therapy क्या करेगा? So unlike chemo and immuno, which involve taking drugs, CAR T cell therapy use a patient's own cells. They are modified in the laboratory to activate T cells and target the tumor cells. So they have been approved for leukemia and lymphomas. दो तरह के कैंसर के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है. तो ये अच्छा है, ये ज्यादा टारगेटेड रहेगा और कुछ फॉरेन नहीं है, तो इसलिए ठीक भी है. टी सेल्स को एक्टिवेट करने का मतलब यही है कि दे आर योर, एक तरह से किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने की बात है. सो टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड एंड देन द जीन for a special receptor that binds to a certain protein on the patient's cancer cell is added to the T cell in the laboratory. जैसे डॉग को स्निफ नहीं करा देते जब उसको ट्रेस कराना होता कुछ, तो वैसे ही टी सेल को स्निफ करा देते हैं कि भाई तुम्हें अब इसको जाके ट्रैक करना, तो वही काम करते हैं. ठीक है. So they are even more specific than targeted agents and directly stimulate the patient's immune system to fight cancer, leading to greater clinical efficacy, and that's why they are referred to as living drugs. So prelims में या तो living drugs के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, या जैसे तो CAR T cell therapy के लिए आ जाएगा. ठीक है. T cells होते क्या हैं? They are lymphocytes and they are type of white blood cells only. They play a central role in immune response and आमतौर पे कोविड-19 में भी यही सबसे इफेक्टिव रिस्पॉन्स रहा लोगों का, चाहे वो वैक्सीनेटेड है चाहे वो नहीं है. टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, सो देयर इज अ जनरल एस्पेक्ट, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं बिकॉज इनके अंदर बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम होता है. अभी आजकल बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हुई है शाम के अंदर, तो उसमें यही पढ़ रहे थे. They basically have digestive enzymes and they can digest anything. Okay. Fine. So in 2022, they asked a question: which one of the following statements describe the role of B cells and T cells, that is basophils and so on, in the human beings? So the protective environment, they protect the environmental allergens. They alleviate the body's pain and inflammation. They act as immunosuppressant. They protect the body from disease caused by pathogens. So D was the answer. Okay. Quick reaction surface to air missile. So QRSAM. So this has now been developed by DRDO. QRSAM. अभी तक हम ये चीजें इंपोर्ट करते थे इंडिया में. सरफेस टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी हमारे लिए एक ट्रबलिंग एरिया था.
सैम हमने डेवलप कर ली थी, अब क्विक रिएक्शन मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो फायर कर सके, तो वो अब डेवलप हो गई है। सो इट्स एन अचीवमेंट, दैट्स ऑल। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है पढ़ने वाला। ठीक है। निसार मिशन, so this is a NASA ISRO synthetic aperture radar. So this has received send-off ceremony at NASA Jet Propulsion Laboratory in California. This will be the first radar of its kind in the space to systematically map the Earth using two different radar frequencies to measure the changes in our planet's surface less than a centimeter across. बस इतना याद रखना। ठीक है। 2014 में शुरू हुआ, जनवरी 2024 में लॉन्च होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। इट विल मैप इंटायर ग्लोबल 12 डेज, मैक्सिमम इतना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत। ठीक है। इंडिया न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी मीन्स का मुद्दा है, प्रीलिम्स का नहीं है। ISRO's SSLV-D2, so that is small satellite launch vehicle. Okay. So essentially now we are developing small satellite launch vehicles to have more private players come on board and participate in India's satellite launch programs. So this will place India ISRO's Earth Observatory satellite EOS-07 and two co-passengers Janus and Azadi Sat. ये सब आजकल नई नई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो स्पेस में आ रही हैं, या जो छोटे कंट्रीज भी हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। स्मॉल क्यूबिक सैटेलाइट्स दे आर बीइंग फॉर्म्ड। सो इसका बेनिफिट क्या होता है, इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होगी ऑब्वियसली, तो उस हिसाब से दे कैन कैरी more loads for more countries, more players, but at a lesser cost. That's the entire thing. इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं ऐसे केस के अंदर, so you can be bit careless. Then global report on neglected tropical disease, बस इतना देखना किसने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया 2023 में। ठीक है। एंड वर्ल्ड neglected tropical disease day is observed on 30th January and it was declared in 74th World Health Assembly 2021. Finished. Prelims में इतना ही चाहिए ये। ठीक है। कौन से neglected tropical diseases होते हैं? So viruses के अंदर रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया एंड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, अलग अलग डिजीजेस विच आर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की कैटेगरी में जो आते हैं, ये एक बार पढ़ लेना है सारे। नेक्स्ट, oldest known Sicilian fossil discovered. So this is Triassic era, 250 to 200 million years ago. Sicilian fossil, क्या नाम है? Puncus vermis more. So it's an amphibian-like structure. No fossils have been found before for this particular era, and this is it. बस इतना पढ़ना है, इसको और नहीं पढ़ना। World Leprosy Day, 29 January, and it's also known as Hansen's disease. What is the theme? Act now, end leprosy. Finished. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। सियाना स्पेक्टेबुलस, ये वाले पेड़ आपने चंडीगढ़ में बहुत देखे होंगे, पीले पीले फूल वाले। ठीक है, लेकिन एक है क्या ये? So now it is there in Kerala also, and in Kerala it is an exotic invasive plant. So that's a severe threat to state's wildlife habitat. Okay, so it's a deciduous tree native to tropical areas of America. लेकिन कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। So what is the eradication plan? So the plan envisages landscape level management of the tree. They're trying to cut it out. Invasive species किसको बोलते हैं? So it's an organism that causes ecological or economic harm in a new environment where it is not native, okay, causing extinction of native plants, animals, reducing biodiversity, competing with native organisms for limited resources, and altering habitats. So there are many invasive species in India. For example,
Charu missile, lantana bushes, Indiana bullfrog, etc. तो invasive species क्या होते हैं वो पता करना. And Sienna spectabilis नाम याद रखना है बस एक पेड़ का. Cholera, nothing much about cholera, you can skip. Space debris बहुत सारी है, हमें मालूम है. Space junk, you have already read about this. Nothing new here. Then Vihangam drone technology. See. So Mahanadi Coalfields Limited, the premier CPSC under the Ministry of Coal, has introduced the drone technology in coal mines to be launched by the web-based portal Vihangam, along with the drone and ground control system. बस इससे ज्यादा नहीं. ठीक है. सिकल सेल डिजीजेस जैसे अनीमिया के बारे में आपको पता है. आमतौर पे रेड ब्लड सेल्स डिस्क लाइक होते हैं, लेकिन उनकी शेप इस तरह से हो जाए तो देन दे बिकम सिकल सेल. ओके. A group of disorders that cause red blood cells to become mishappen and break down. The cell die early, leaving a short age of healthy RBC and can block blood flow, causing pain. So now, the government of India under National Health Mission is supporting the states in their effort to prevent and manage sickle cell diseases. In Union Budget 2023-24, there is a mission to eliminate sickle cell anemia by 2047. So that's why it's important. Okay. So types. So there is a sickle cell anemia or crisis. Anemia basically means abnormal HB levels, hemoglobin levels, and then there is blockage of blood vessels causing severe pain and organ damage. That is sickle cell crisis. दो तरह के problems इसकी वजह से होंगे. ठीक है. Okay. Treatment क्या है? There is blood transfusion, one, and there is hydroxyurea. So this is a medication that can help reduce the frequency of painful episodes, prevent some of the long-term complications of the disease. It can also be treated by bone marrow or stem cell transplantation. Essentially, the blood needs to be changed. Next, norovirus. So norovirus infection was confirmed from 2 school children in Kerala. What is this? It's a group of virus that leads to gastrointestinal illnesses, inflammation in the lining of the stomach and intestine, so creating vomiting and diarrhea. That is norovirus. Okay. It is resistant to many disinfectants and can heat up to 60 degree Celsius. आमतौर पे कोई भी वायरसेस जो होती है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते खत्म हो जाते हैं, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर ये रह पा रही है तो मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रह पाएगी. हमारा ह्यूमन बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो 40 to 43 डिग्री से ज्यादा नहीं जा सकता. ठीक. दैट इज व्हेन वी आर गेटिंग फीवर. ठीक है. So at that point also it can remain there. So there is no specific treatment available to cure the virus, and generic medications for diarrhea and vomiting can help cure the disease. Just you can pray that it washes out of your stomach. Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021. So Bombay High Court has allowed a married woman to get her 33-week pregnancy medically terminated, citing the length of pregnancy does not matter in case of severe fetal abnormalities. So this is to be noted for prelims. Under MTPC Act, the maximum gestational age at which the women may obtain the medical abortion in India was raised from 20 weeks to 24 weeks. And beyond 24 weeks, the medical termination of pregnancy is allowed if serious fetal abnormalities are found. तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है दोनों स्टेटमेंट्स. ठीक है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर आएगा भी तो. Then now we'll continue from here tomorrow. Measles and rubella. Tomorrow's class I'll be taking a little early. That is around 8 a.m. 8 a.m. to 10 a.m. Okay. So that's that for today. Thank you. Take care. Thank you, sir. Sir, I All have a right. question. Please ask. सर HP का एग्जाम का कोई डेट